So the nucleophilic substitution reaction. तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इसके बारे में. What is nucleophilic substitution reaction? As the name says, nucleophilic, right? So the nucleus, it comes from the word nucleus, and nucleus क्या होता है आपका? Positive, right? And philic is your loving, right? तो nucleophiles वो होते हैं, they are positive loving, right? जो positive loving, and basically they are electron rich. Nucleophiles क्या होते हैं? They are electron rich. So electron rich होते हैं तो ये कहाँ पे जाएंगे? Obviously जहाँ पे positive के पास जाएंगे, right? तो cations के पास जाएंगे. So see here, for example, let's consider RX. Right? Haloalkanes के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो this is your RX. So if this bond will break, then the X, that is your very much electronegative element, so this will have partial negative charge, and the R will acquires the partial positive charge, right? तो here देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दिस विल अटैक ऑन पॉजिटिव, वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज देयर, पॉजिटिव साइड पे करेगा, राइट? तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आर पे अटैक करेगा, व्हाई? बिकॉज इट इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से एक्स रिमूव हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज एक्स इज बेस्ट गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं, दे आर गुड लिविंग ग्रुप. ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, दीज आर टू टाइप्स. ऐसे reaction. Okay, so these are of two types. First one is SN2 reaction and SN1 reaction. Okay, so the SN2 reaction is basically, it is a nucleophilic substitution reaction which is bimolecular, right? This is the name. The two here comes from bimolecular, right? But SN1 is your unimolecular. Unimolecular. Unimolecular type of reaction. It means see, तो SN2 reaction means क्या हुआ? It means for reaction you need both substrate as well as your reagent, right? तो अटैक करने वाला और जिस पे अटैक होगा, दोनों ही हमें चाहिए इस रिएक्शन में, right? Otherwise ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, right? And in that case 1 degree alkyl halide में सबसे easily ये रिएक्शन होती है, right? So the rate of reaction will depend on both substrate as well as reagent, right? And here in SN2 we need a strong nucleophile. We need a strong nucleophile, and the order of reactivity will be 1 degree, 2 degree and 3 degree, right? तो 1 degree alkyl halide में सबसे easily ये reaction होती है, and 3 degree में बहुत ही ना के बराबर होती है, right? And on the other hand, SN1 reaction, that is a unimolecular reaction, इसमें दोनों की नीड नहीं होती है, right? Only किसी एक की जरूरत होती है, and we basically focus on the stability of carbocation here. The stability of carbocation is very much important in this type of reaction, and here 3 degree, the order of reactivity will be
3 degree, 2 degree, and 1 degree. Okay, just opposite of that SN2 reaction. And the rate will depends on only Rx. Got it? So first, we will see the SN1 reaction. SN2 reaction. So this is single step reaction. Single step में ही reaction हो जाती है ये. Okay. So let's see the reaction. This SN nucleophilic substitution reaction is very much important, right? Sometimes they ask you differentiate between SN1 and SN2 reaction with the mechanism, right? हमेशा आता है, almost हमेशा आता है. This is very much important. तो single step में होता है ये. तो इसका reaction, let's see. If CH3 alkyl bromide हम ले रहे हैं, right? In the presence of a strong nucleophile, that is NaOH. Okay. तो यहाँ पे क्या बनेगा? C. यहाँ पे CH3Br है, राइट? और यहाँ पे OH, यहाँ पे Na प्लस एंड OH माइनस. तो OH इज योर न्यूक्लियोफाइल है, राइट? OH माइनस. तो OH कहाँ रिएक्ट करेगा? CH3. व्हाई? बिकॉज इट इज पॉजिटिव. तो ये CH3 पे जैसे ही ये अटैक करेगा, द ब्रोमीन विल लीव फ्रॉम हियर, राइट? तो क्या बनेगा हमारा? द प्रोडक्ट विल बी योर CH3OH प्लस Na, sodium bromide will be formed. Got it? See here, here inversion of configuration will occur, right? So आप जो ये ले रहे हो reactant जो है, just इसका inversion product बनेगा. Okay, so let's see the mechanism. Mechanism is very much important. See here, and here bromine is attached, right? Let's see here nucleophile OH. OH will attack, and the transition state will be formed. Bromine here, and here OH, right? This is the transition state. Okay, the old bond will break out and the new bond will be formed, hence making the inversion product. That is here OH will come, and H, H, H plus Br, right? So this is the mechanism of SN2 reaction. Let's see the favorable conditions. What are the favorable conditions for SN2 reaction? Okay, so see, first is your, there is a need of strong nucleophile. Strong nucleophile की जरूरत होती है यहाँ पे, right? For example, you can take KOH, potassium hydroxide, NaOH, Cn minus ले सकते हो, cyanide, right? This is an ambidentate nucleophile, remember that. I minus, okay? Next condition will be your good living group होना चाहिए. Good so
in the halogens, the iodine that will be the, so this is the best living group, right? After that, after iodine, bromine, right? Fluoride, and at last, fluoride. This is very bad living group, right? Next is your less steric hindrance होना चाहिए. Less steric hindrance होना चाहिए. Okay. Less steric hindrance कैसे होगा? सबसे कम हो. मिथाइल, देन आपका प्राइमरी में होता है, देन सेकेंडरी में, टर्शियरी में, राइट. टर्शियरी में आपका बहुत ही रेयर केस में होगा, ना के बराबर, राइट. फोर्थ इज योर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए. पोलर, you can also write in the difference between SN2 and SN1, these points आप लिख सकते हो, है ना. तो इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की नीड होती है. व्हाट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट? नेम से ही लग रहा है पोलर होगा लेकिन एप्रोटिक मतलब विदाउट प्रोटॉन्स, राइट. पोलर होगा लेकिन प्रोटॉन्स नहीं होंगे इसमें, लाइक फॉर एग्जांपल एसीटोन, डीएमएसओ, राइट. डीएमएसओ का कैसा होता है, दिखता है डीएमएसओ? तो बेसिकली एसीटोन की तरह ही होता है, बट हियर सल्फर इज सल्फर इज देयर, राइट. स्ट्रक्चर इसका डीएमएसओ का ऐसा होता है. गॉट इट. तो सो नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, एग्जांपल्स. SN2 रिएक्शन, ये क्वेश्चंस के तरह भी पूछ सकते हैं, राइट. कन्वर्जन दे सकते हैं. मैं जो अभी करा रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स. ओके, तो बहुत ही अच्छे से देखो, यहाँ समझो, राइट. सो व्हेन यू टेक, लेट्स टेक CH3, yeah, okay. When you react CH3Br in the presence of KCN, right. So in the presence of KCN, this will form CH3CN plus KBr will be formed, right. So this is methyl cyanide. Methyl cyanide. Next is your EgCN. As you know that CN is an amidantyl nucleophile, right. तो इसके दो होंगे अटैकिंग साइट, कार्बन से भी अटैक कर सकता है and नाइट्रोजन से भी, right. So here methyl cyanide is formed, and in this case isocyanide is formed, CH3NC, right, plus AgBr. This is methyl isocyanide. Next is your, again this is very important, CH3ONA plus, right. अगर आप ये लेते हो तो in this case ether will be formed, NaBr निकल जाएगा, right. NaBr, और आप ether बन जाएगा. Ether is CH3O CH3. This is ether. And what is the name of this reaction? This is basically Williamson synthesis. Williamson synthesis. Next is your, when you react alkyl bromide by potassium nitrite, KNO2, this is potassium nitrite, तो क्या बनता है? तो see here, see the mechanism I'm writing below this line. So when this will break into K plus, right, and NO2 minus. See here, the NO2 structure is N
डबल बॉन्ड O एंड हियर नेगेटिव चार्जेस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो अटैकिंग कहाँ पे होगा, अटैक कहाँ से होगा, यहाँ से, ऑक्सीजन साइड से। तो द प्रोडक्ट विल बी योर CH3O and right plus KBr. So here methyl nitrite is formed. Methyl, this is methyl nitrite. Okay, another case is there. Don't confuse here. If you take AgNO2, right? So don't make same compound, right? यहाँ पे क्या होगा आपका AgNO2 के साथ, AgNO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो Ag, here O and डबल बॉन्ड O एंड आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है ये अटैक करता है, दिस इज द दिस दिस अटैक्स द सबस्ट्रेट, राइट। सी, वो क्या होगा आपका, ठीक है, तो CH3 इनकी तरफ से अटैचमेंट होगी, राइट, एंड AgBr बन जाएगा। होप यू गॉट इट, राइट। CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन की तरफ से, ऑक्सीजन की तरफ से अटैचमेंट हो रही थी, राइट, अल्काइल ग्रुप में। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ से होगा। Sorry, okay, so in this case, CH3 and N plus charge, O minus charge, and so this is nitromethane plus you will get AgBr. Hope you got it. Okay, so this is very much important for your board exam. Next is your SN2 SN1 reaction. So जनरली ये 3 डिग्री एंड 2 डिग्री में होता है, 1 डिग्री में नहीं होता, राइट। एंड हियर दिस नो नेसेसरी फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल
वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलता है इस रिएक्शन में. ओके, so let's see the reaction first, then we will move to the mechanism. We will take 2 bromo 2 methyl propane, right, plus OH. This will give you CH3, 3, and COH. Bromine will be replaced by the nucleophile and here minus. Okay, so see the mechanism of SN1 reaction. See, CH3 is there, CH3, and यहाँ पे आपका ब्रोमीन है. तो ये क्या है, बेसिकली इट इज अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, पे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 स्टेप होता है, राइट. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्लो रिएक्शन. दिस इज स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या होता है, सी से फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन, हमें ब्रोमीन निकल जाएगा एंड ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से हमारा प्लेनर में कन्वर्ट होगा, राइट, फॉर्मिंग कार्बोकैटायन. फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज देयर, राइट. तो यहाँ से bromine will be removed out and it will form tetrahedral structure, planar structure from tetrahedral structure. पहले क्या था, ये tetrahedral structure था, राइट. bromine remove हो जाएगा तो it will form planar one, CH3, and यहाँ पे plus charge, it will form carbocation. Okay, so 3 degree, as you know that 3 degree carbocation is very much stable. ठीक है, it is stable. So the nucleophile will either attacks from the front side or from the back side. न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, राइट. और OH जो होगा या तो ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा या फिर बैक साइड से अटैक होगा. तो यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि 2 टाइप्स के 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे. फर्स्ट इज योर इन्वर्जन प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज योर रिटेंशन प्रोडक्ट. सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका फ्रंट साइड से करता है अटैक, बैक साइड से करते हैं यहाँ, तो here OH will be attached, CH3, 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 right. So here you can see that inversion product बन रहे हैं, right. Both will be 3 degree, right. But here only orientation will be different. Inversion product and the second one is your सेम आपका इसकी तरह बनेगा, रिएक्टेंट की तरह से. Here CH3 and here OH, right. So both are 3 degree. This is also 3 degree. 3 degree inversion. This is your inversion product and this is your retention product, right. So these are racemic mixtures. What we say, racemic mixture, the mixture of two compound, that is inversion product and retention product. Okay, hope you got it. So the next is your, let's see the what are the favorable conditions for SN1 reactions.
See here, as I said, weak nucleophile maybe हो जाता है, right? Like weak nucleophile, you can say water हो गया, RH हो गया, right? And there is a need of good living group, same as that of SN2 reaction. Good living group होना चाहिए. क्या होती है? ऑर्डर क्या होता है? सबसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड and okay. And what is the stability of carbocation? तो आपकी 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. SN2 के केस में क्या होता था? 1 डिग्री सबसे स्टेबल होती थी, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. गॉट इट? एंड हियर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की नीड होती है, बट SN2 में क्या होता था? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती थी, राइट? पोलर एप्रोटिक प्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या होते हैं? एग्जांपल्स, जो पोलर भी हो उसमें प्रोटॉन भी हो, लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज योर वाटर, मिथेनॉल, ethanol, etc. Got it? Okay. So these are the very this topic is very much important. That is the nucleophilic substitution reaction, uh, SN1 and SN2 type of reaction. Their